पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपनपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यदपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वा अमुष्यदपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत् संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रस्त्येव तिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददात् कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தண்ணீரிலிருந்து இயற்கை, இயற்கையிலிருந்து உலகம், உலகத்திலிருந்து வாழ்க்கை, வாழ்க்கையிலிருந்து பரம்பொருள், அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த தெய்வீக ஒற்றுமையே மந்திர புஷ்பத்தின் மையச் செய்தி. அதனால்தான் கோயில்களில் அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை முடிவில் மந்திர புஷ்பம் பாராயணம் செய்யப்படுகிறது. அது படைப்பின் முழுமையையும், பிரபஞ்ச ஒற்றுமையையும், பரம்பொருளின் அனைத்துலக இருப்பையும் நினைவூட்டுகிறது.